Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to speech processing. So today we'll be talking about hidden Markov models. So as we have seen through our journey in speech processing, that for speech recognition, essentially we want to align a sequence of frames in an audio file with a sequence of alphabets or a sequence of words that we have. And this can obviously be divided into subparts where the sequence of sounds is mapped onto a sequence of phonemes. So by sounds I mean audio file. So portions, frames of the audio file, map it onto a sequence of phonemes, and then map the phonemes onto a sequence of words, and that would be your speech recognition pipeline. So in order to do that, we need a capability, we need a mechanism for aligning two sequences and two different sequences. So we have a sequence of frames and we have a sequence of words, or say the sequence of alphabets of the language out of which the words would be constructed, and we want to align them. So we need a mechanism of aligning these two sequences. We have already seen that the dynamic time warping could be essentially used for something like this, but the dynamic time warping is deterministic in the way it works. We need to come up with an algorithm that could essentially, a model that could essentially be trained on data to adapt it to a particular type of training data. So hence we need a model which is probabilistic and not plain deterministic. So that's what we are going to construct step by step from here onwards. We have already seen the bigram, unigram, trigram language models. So now, based on that knowledge, we will start constructing what is known as hidden Markov models. So these are some of the references for these slides. In the latest edition of your book, The Speech and Language Processing, they have moved the Hidden Markov Models chapter to the appendix. So that's where you can find it. In the second edition, where it was done in more detail and it was used in the chapter on speech recognition as well. You will find it obviously in the speech recognition chapter, and then there are chapters on hidden Markov models. So these are the main references. Other than that, I have used other references wherever they are used. I will mention, I will cite a link to those places, and also most of these slides were constructed by myself. So I own the copyrights for most of the material that we have created, and the examples that we have created as part of these slides. All right, so let's quickly recap. And you're just looking at a black slide because I'm planning to write on it. So let's quickly recap of what we already know. We have already seen that a sequence, for example, this is a nice, and I don't know, the sentence continues. If you want to find the probability of such a sequence and you want to use, let's say, a bigram language model, these probabilities would be simply given as probability of this given the start of sentence. So assume you have a start of sentence here, into the probability of is given this, into the probability of a given is, into the probability of nice given a, into, and so on and so forth. This will continue. So we have already seen this. We already know how to calculate these probabilities. If you want to find out the probability, this first probability, the probability of this given the start of sentence, you will essentially just find out the count of all of the times that this sequence, that this occurs at the beginning of a sentence, at the start of sentence. You will just find the count of this in your corpus, and you will divide it by the count of the start of sentence. So of all the times that the start of sentence occurred, how many times it was followed by the word this. So this is how you calculate these probabilities using relative frequencies, and we have already done this in quite a lot of detail. Similarly, just to do one more, the next one will be count of this is divided by the count of this. So of all the times that the word this occurred, how many times it was followed by the word is, and so on and so forth. Now we can represent these same probabilities by using what is known as a Markov chain. So if you remember, when we first discussed the idea of finite history, we called that the Markov finite history assumption, that the probability of a particular event can be estimated from
just based on a finite context, just based on so in this case, for the first order Markov assumption, it can be estimated just using the previous observation, just using one previous word. You can find out the probability of a given word. So this is essentially what is the what is also known as the first order Markov chain. So how you construct that chain is simply, in this case, this would be, let's assume you have this is nice, and so on and so forth. So what we do is we have these states and we have these transitions between states, and here the probability, this probability is known as the transition probability, and this is essentially the probability of is given this. All right, so hopefully this is not too difficult to understand. I did not mention here the start of sentence. Obviously the start of sentence would be a state here as well, but this is just a particular example, right? You can generalize this model, this Markov chain, to all of the words in the corpus. So then what's the probability of, let's say, a given this? So what's the probability that a follows this, and what's the probability, let me just write it a little bit neatly, what's the probability that nice follows this, and then what's the probability that the next possible word in the corpus follows this, and so on and so forth for all of the vocabulary, for all of the V words in the vocabulary, right? So these probabilities are the probabilities of the probability of a following this, and this probably would be a very small probability, if not zero, because this is not very it does not sound to be a very grammatical sequence. And then from here onwards, from a, there would be a probability of a following a, and the probability of, let's say, the next word, let's say this following a, and the probability of nice following a, and so on and so forth. So at each step in this sequence, you can find out the probability of every word following every other word. So if I just draw it a little bit more neatly, what we are essentially saying is that you have the possible words, let's say nice, and everything else, like you have states for every possible word in the vocabulary, and then you find out the probabilities of going from every word to every other word, and what you construct here is known as a Markov chain. So now the interesting part of this is that because this is a very sparse matrix, this is coming from a very sparse matrix, so not every word would be following, let's say, the word this. So therefore many of these probabilities might be just zero. So if these probabilities are zero, we can just prune these transitions. So you don't need to keep all of the transitions in your final model. All right. So when you're done, you would be left with only a subset of these transitions, which are actual transitions, and for the other ones, we're just going to say that we never observed this in our training data. However, if you also remember our discussion from the time where we did smoothing, you know that we tend to remove these zero probabilities. So at least for the words which were found in your training data, once we normalize them, once we smooth them, let's assume we smooth them using let's say Laplace smoothing. So therefore all of these zero probabilities would be converted into very small but non-zero probabilities, and therefore these states would be back. All right, so I hope this is making sense. This is what is known as the first order Markov chain. Now the Markov chains, so there's nothing new by the way here. मैंने अभी तक जितना कुछ आपको पढ़ाया है आज ये इस slide के अंदर, you've already studied this under the heading of bigram models, bigram language models. There is nothing new here. This is just writing the same thing in a graphical manner. The problem with this model, or the limitation of this model, is that although it can give us the probability of a sequence, so you have a sequence of words W, let's say, and you have another sequence of words X, you can find the probability P of W, and you can also use this to find the probability of P of X, and you can find out, you can answer questions like which one of these two are more probable. We do not have a direct way here of comparing W and X and finding out an alignment, or maybe finding out
the most probable sequence X given the sequence W. So if we want to find out the probability of sequence X given sequence W, this is probably not something which we can do using using a Markov chain or a simple Markov chain. And this is essentially what we are interested in doing. We want to find out the probability of a sequence of frames, audio frames, given or rather the other way around. We want to find out the probability of a sequence of phonemes, let's say, phonemes, given a sequence of frames in an audio. So this is essentially what we are interested in, and we are not finding a way here using simple Markov chains to find these probabilities, like the probability of one sequence given another sequence, and also then afterwards finding the alignment between these two sequences. So this is essentially what we are going to do using the hidden Markov models. So now you know at least where the Markov is coming from in the term Markov models. So this Markov chain is a simple Markov model. Now what's hidden? That's the next question that we will try to answer. So we will come up with let's look at a particular example, a real world example first, to motivate the concept of hidden Markov models. And once we are clear that why we need hidden Markov models, then we will basically construct a new and a simple example where the example itself is extremely simple and we don't need to like concentrate on the nits and grits of the example, and we will just concentrate on forming or formulating the concepts of the hidden Markov model, how it's used, what are the various questions that we ask about it, and how do we answer those questions. All right, taking a step back, you already know this description of classification. I just want to state it out once so that we are very clear about this description in this whole lecture. So the classification problem is that you are given as input, you are given a specimen D. We often call this D a document as well. So you have a document or a specimen, and you have a fixed set of classes C. So C1, C2, C3, C4. So the specimen could be, for example, a photograph, and the classes could be cat and dog. Let's say two classes. And you need to eventually classify the specimen that you're getting into one of those classes or multiple of those classes. We have already looked at those details. And you're given a training set of M labeled specimens. So you are already given, like, let's say photographs, so a million photographs where each photograph is marked with its true class. So you have the ground truth. So this is your training set. And now using this training set, you learn a classifier gamma which maps from the image, in this case the specimen D, to the class C. So once you have learned this classifier, now you can use this classifier to classify any input specimen. So give it a new specimen and it will output the class of that specimen. That's the classification problem. You use a training set. It's a supervised learning problem. You use a training data set to learn the classifier which maps from the input to the outputs, the observations to the labels, and then given a new observation, given a new specimen, you can find out the class of that specimen. All right, so in our particular case, the classification problem is to recognize a phoneme from its spectral features. So what you see here is what you are very familiar with, the spectrogram of a particular phoneme. You can also see that this is a vowel. If you look at it a little bit more, you can also figure out which vowel it is. The F1 is closer to F2, so you can find out which part of the vowel quadrilateral does this vowel belong to, but that's not the question right now. What the question is that assuming frame F and phoneme P, what you're trying to find out here is the probability of phoneme given frame. So you want to find out the phoneme which was uttered here. So you are interested in finding out the probability of a phoneme given this frame. All right. And this, as you know, if we use naive Bayes, is simply argmax over the probability of frame given phoneme into the probability of phoneme, and you look at all phonemes here. So you go over all phonemes and you find out the probability of outputting this frame, having this frame given that phoneme, as we know very well from our experience with naive Bayes and the Bayes theorem, into the probability of that phoneme itself, which will probably come from some relative frequency in a corpus. So how would you calculate this?
So these are the two probabilities, the probability of frame given phoneme, given a particular phoneme, the probability of generating a frame like f, and the probability of the phoneme itself, the probability of a particular phoneme. The way you calculate is, let's say for Urdu, where we have 65 phonemes, you just want to find out the max of over all of these probabilities, and then the argmax, the argument, the phoneme that maximizes this relation. So the probability of this frame given ba into the probability of ba, the probability of this frame given da, the probability into the probability of da, the probability of this frame given ga into the probability of ga, and so on and so forth for all 65 phonemes of Urdu. So you find out all of this, you find out the max, and then you find out the argmax, the phoneme that maximizes this relation. All right. So the probability of ba, for example, here could just be a count in the corpus, and the probability of fa given ba, this is something that we will learn to estimate. So this is not so straightforward. How would you basically map between a phoneme and something like a frame with spectral characteristics? So that mapping, we have already gone all the way to MFCCs. We know a better representation of this frame, but how do you map between the two? That would be the last topic of our of this semester. This is how far we are going to get this semester, which is next week, inshallah. In our classes, we'll be looking at how you basically map between frames and phonemes. But for now, just assume somehow you're finding this probability. So this is one black box that we are going to take with us throughout this discussion of hidden Markov models. We will not explain it now. We will explain it once we're done learning the hidden Markov model. So I hope we're on the same page until now. All right, but can we do any better? Do we know anything else about this frame? Can we find out when we're trying to estimate the probability of a particular phoneme given this frame? Can we do any better than just finding this one probability? This probability? Yes, we can. As a matter of fact, different phonemes have different probabilities of occurrence given their context. So for example, पा के बाद बा आने की क्या probability है, and पा के बाद आ आने की क्या probability है. So उर्दू में कितने ऐसे word होंगे जिसमें दो आवाजें जुड़ के साथ आई हुई हों, whereas कितने होंगे जिसमें पा की word आई हुई हो. As you can see, the sounds पा seem more probable as compared to, let's say, ba, which may never occur in Urdu. Without any vowel in between them, or if they do, वो यूं होगा कि एक पे आवाज खत्म हो रही होगी, दूसरे से शुरू हो रही होगी, so it will be a smaller probability compared to like pa followed by a vowel a, right? So this is the second probability that we can use. This is the probability that we know how to incorporate. Our Markov chains are based on these probabilities. So essentially, the new probability that we are looking at this point is the probability of a phoneme given a frame. That's the new probability that we are looking at. The other probability which we have already been looking at are the probabilities of a phoneme in a given context. अब जरा थोड़ा सा कुछ चीजें हो सकता है, कभी-कभी आपको समझ आने में जरा मुश्किल हो रही होगी, but just stay with me and everything will become clearer and clearer. Where we essentially want to just incorporate two different probabilities into one graphical model, into one Markov chain, and that's going to give us the hidden Markov model. Let's keep looking at this. All right. So assume that you have this frame, and you can definitely find the probability of the frame given a particular phoneme ba. और जैसे कि हमने कहा कि ये अभी हमें निकालनी आती नहीं है, लेकिन वी आर वेरी क्लोज टू इट. एक दो स्टेप्स में हम इस तक पहुंच जाएंगे कि हम एक पर्टिकुलर फोनीम से इन स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे. वैसे ये भी अगर आप सोचें तो इतना मुश्किल काम नहीं है. हम पूरी कॉर्पस के अंदर उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लेंगे, देखेंगे जहां जहां बा बोला गया है इन आर ग्राउंड ट्रुथ, उसके स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. उन स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लस्टर कर लेंगे, एंड दैट क्लस्टर विल बी द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रेम ऑफ द फोनीम बा. In one sentence, I've explained to you everything जो कि मैंने अगले हफ्ते आपको पढ़ाना है, using first k-means clustering, and then उसके बाद I will teach you that using the Gaussian mixture models. So ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. जिनको ये पिछला एक जुमला नहीं समझ आया कि k-means और Gaussian mixture model क्या होते हैं, वो भी बिल्कुल परवाह ना करें. जिस वक्त हम वहाँ पहुँचेंगे आपको समझ आ जाएगा. इतना बस समझ लें कि हर फोनीम को पूरी की पूरी कॉर्पस में जाकर देखेंगे कि उसके पैरेलल हमारी ऑडियो फाइल के अंदर किस तरह के फ्रेम्स पड़े हुए हैं. उन फ्रेम्स को पकड़ के MFCCs लेंगे और MFCCs को जाकर क्लस्टर कर लेंगे
और आपके पास जो उसके MFCC के लेट से 12 कोएफिशिएंट्स हैं, 12 जो उन कोएफिशिएंट्स हैं, 12 के 12 का हम एक एक क्लस्टर बना लेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा उस पर्टिकुलर फोनीम का। जब ये फोनीम बोली जाती है तो इस किस्म के MFCC आते हैं। दैट्स एसेंशियली हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी। ये इसका बेसिक आइडिया होगा, बट अभी इसको आप भूल जाएं। तो एक ये प्रोबेबिलिटी है जो हम कहीं से निकाल लेंगे, और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि लेट्स से बा के बाद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। And now the product of this probability and this probability can give us a better estimate of the probability कि ये वाला फ्रेम में क्या बोला गया था। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से मैं आपसे ये कहूँ कि आप कहीं स्पेलिंग करेक्शन करें और वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ हो, लेट्स से आपने लिख दिया ये वर्ड एक ने छोड़ दिया। अब ये हमें लग रहा है कि मैं भी शायद यहाँ दैट लिखना चाह रहा था वो, राइट। तो द थिंग इज कि एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि गिवन दिस टाइपो, गिवन दिस रॉन्गली रिटन वर्ड, सही वर्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो गिवन दिस क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दा लिखना चाहता था, गिवन दिस क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दैट लिखना चाहता था, सॉरी लेट मी रब दिस, दैट लिखना चाहता था, गिवन दिस क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉक्स लिखना चाहता था, गिवन दिस क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिश लिखना चाहता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये भी हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटीज, राइट। और कोई ना कोई हम इन सीक्वेंसेस को मैच करके इन प्रोबेबिलिटीज को रीजनेबली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देयर इज अ सेकंड प्रोबेबिलिटी हियर। इससे पहले उसने क्या लिखा था, पिछला वर्ड क्या था, WI-1 क्या था। WI-1 के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इनमें से कौन सा वर्ड आना ज्यादा प्रोबेबल था, द, दैट, फॉक्स, फिश, कौन सा ज्यादा प्रोबेबल था। So now given these two different probabilities, the probability of the occurrence of that correction in this context and the probability of a correction given this typo, ये दो probabilities मिलके आपको ये दे देती हैं कि सही वर्ड क्या आना चाहिए। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, दिस इज हाउ यू रन योर स्पेल करेक्शन सिस्टम्स, राइट। और ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये वो है जहाँ पे आपके पास टाइपो आ रहा हो, ऐसा वर्ड आपने जनरेट कर दिया जो डिक्शनरी में नहीं था, और ये उस केस में निकालने का तरीका है to find the probability of a particular word, a particular correction in a particular context। ठीक है, अब यही चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर स्पीच रिकग्निशन के ऊपर। तो अब मसला ये है कि ये प्रोबेबिलिटीज हमने लिख तो दी, ये सारी की सारी कितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी जिससे हमें ये फाइंड करना है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ बा के बाद बा आना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डा के बाद बा आना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गा के बाद डा आना, सो बाद बा आना। सो दिस इज essentially a state space, so this is essentially a state space। जिस state space के अंदर अब आपने सर्च करना है कि सही यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर सही फोनीम कौन सी है जो मुझे यहाँ लिखनी चाहिए, कौन सी सही फोनीम है जो मैप होगी इस पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर, राइट। तो अब इस स्टेट स्पेस में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि हम जाहिर है इससे पिछले वाले की भी प्रोबेबिलिटीज, यहाँ वाला जो भी फ्रेम था उसकी भी प्रोबेबिलिटीज निकाल कर आए हैं। ठीक है, एज्यूमिंग कि हम इस सीक्वेंस में, इसके इधर भी सीक्वेंस है, उसके पीछे भी सीक्वेंस है, तो हम इससे पिछले की भी प्रोबेबिलिटीज निकाल कर आए हैं। तो इसेंशली वी वांट टू फाइंड दैट बेस्ट पैथ थ्रू दिस स्टेट स्पेस, जो कि हमें ये बता रहा हो कि अच्छा इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस क्या है। सो इन अदर वर्ड्स वी वुड नीड टू एस्टिमेट ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज एंड दीज प्रोबेबिलिटीज, हर जगह से हर जगह जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, और फिर इस पूरे के पूरे मेज में से आपको ये मिलेगा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पैथ क्या है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ खड़े होकर जब देखेंगे तो इन सब में से कोई ना कोई एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पाथ आ रहा होगा, और उसमें ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट हुई भी होगी कि यहाँ तक आने के पीछे की प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अभी ये बात अब आई नो कि एट दिस पॉइंट दिस माइट बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट स्टे विद मी। थोड़ा सा अगर इस वक्त 20% भी आपके जहन में समझ बनती जा रही है ना, दैट्स ऑल आई नीड, because once I will start doing an exact example, a new example on HMM, this all of this will become inshallah absolutely crystal to you। All right, so this is a huge state space जिसके अंदर से we want to find out the best path, the maximum probability path, जो कि हमें बता रहा होगा कि किस फ्रेम के ऊपर कौन कौन सी फोनीम मैप होनी है। सो लेट्स से यहाँ पे ये होनी है, और लेट्स से यहाँ पर ये होनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, किस फ्रेम पे क्या फोनीम मैप होनी है। सो इट विल एसेंशियली बी क्रिएटिंग अ पैथ हियर, एंड दैट पैथ विल बी गिविंग यू द मोस्ट प्रोबेबल मैपिंग बिटवीन योर वन सीक्वेंस एंड द अदर सीक्वेंस। ठीक है, all right, and this is how it's going to proceed। so this is your whole audio file, जो जिसको यहाँ पे हमने चंक कर दिया, ये आपके फ्रेम्स पड़े हुए, और इन फ्रेम्स के ऊपर अब कहाँ पर कौन सी फोनीम बोली गई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी फोनीम्स पड़ी हुई हैं जो इस जबान के अंदर आती हैं, ऑल पॉसिबल फोनीम्स। लेट्स से उर्दू की पूरी 65 फोनीम्स यहाँ पड़ी हुई हैं, एंड देन यू आर एसेंशियली फाइंडिंग आउट अ पैथ इन दिस सीक्वेंस, लेट्स से, जो कि इसको मैक्सिमाइज कर रहा हो।
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पैथ, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन टू द अदर एंड ऑफ emitting a particular phoneme is at this frame. ठीक है, तो ये अब दो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ गई। अगर आपको याद हो इस मौके के ऊपर, ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज आपको जितनी नजर आ रही हैं, ये आपके पास मार्कov चेन में भी थी। जो नई प्रोबेबिलिटी यहाँ नजर आ रही है वो ये वाली प्रोबेबिलिटी है कि गिवन दिस फोनीम क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा फ्रेम निकले। ठीक है, ये नई एक प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी विच मेक्स दिस Markov chain converts it into a hidden Markov model। और अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो hidden क्या चीज़ है and why do we call it hidden and so on and so forth। अच्छा जनाब, so let's begin with a concrete example। पहले मैं आपको थोड़ी सी रीजन बता दूं कि मैंने ये एग्जांपल कंस्ट्रक्ट की क्यों थी। सो आई डिड दिस व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग स्पीच प्रोसेसिंग। मुझे ऐसा लगता था कि व्हेनेवर आई गिव रियल एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से स्पीच रिकग्निशन या लेट्स से स्पेल करेक्शन, और उसकी मदद से आई यूज्ड टू टीच हिडन मार्कov मॉडल्स, बिकॉज इस हिडन मार्कov मॉडल में मूविंग पार्ट्स बहुत है। देयर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो होता क्या था कि most of my students remained confused in the problem itself कि जी वो स्पीच रिकग्निशन नहीं समझ आ रही इसलिए एचएमएम नहीं समझ आ रहा। सो जस्ट टू डीकपल बिटवीन द टू आई कंस्ट्रक्टेड अ सुपर सिंपल एग्जांपल, एक ऐसी एग्जांपल जिसमें कुछ सोचना ना पड़े। सो दिस इज जस्ट a kind of useless example that I created, and the example itself is not useful. The purpose of the example is that it will help you understand HMMs. And once you have understood HMMs using this example, now using that concept of the HMM, you can apply it to speech recognition or to any other problem where HMMs are a reasonable model to use, right? So अब हम इस example को बनाते हैं with this background in your mind that the reason I constructed this as an example is just to facilitate the understanding of hidden Markov models. So suppose, let's construct the example now. Suppose you want to buy three things. आपकी जिंदगी के तीन मकसद हैं। You just do three things, which might be very close to being true. That you want to buy pets, like तोता, बिल्ली, कुत्ता, कुछ आप खरीदना चाहते हैं. So you want to buy pets, you want to buy food, and you want to buy electronics. Just three things that you do in your life. You buy pets, you buy food, and you buy electronics. Just three things. And also assume कि जहाँ आप रहते हैं, let's say यहीं की example ले लेते हैं, there are just three markets in the whole city. The whole city is composed of just three markets. There is an electronics market, there is a pet market, and there is a food market. I'm calling it a food street here. राइट, अपने जहन में कुछ रफ सी एग्जांपल्स ले आए तो थोड़ी और आसानी हो जाएगी आगे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लेट्स से हैफीज सेंटर सोच लें, पेट मार्केट में कोई वो जो एक सदर के पास जो एक मार्केट है पेट वाली बड़ी सी वो सोच लें, फूड स्ट्रीट में कोई एक फूड स्ट्रीट सोच लें, आई डोंट नो बादशाही मस्जिद के पास जो फूड स्ट्रीट है वो सोच लें, या एम आलम रोड सोच लें, व्हाटएवर। And then think of three concrete examples of the things that you want to buy. So you want to buy a parrot, let's say, and you a parakeet, let's say. You want to buy food, burger खाना चाह रहे हैं आप, junk food, whatever. And you want to buy, let's say, electronics. You want to buy, I don't know, a television, LED, or whatever. ठीक है, जहन में कुछ एग्जाम्पल समझ में आ गई। नाउ यू मे स्टार्ट, अब आपने करना क्या है, यू वांट टू बेसिकली टू कंस्ट्रक्ट दिस एग्जाम्पल, यू मे स्टार्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज मार्केट्स विद सम प्रोबेबिलिटी। हम कहेंगे कि आपने अपने दिन का आगाज किसी एक मार्केट से किया, लेट्स से यू जस्ट टेलीपोर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एंड यू स्टार्टेड बाइंग स्टफ। For this lecture, we will assume equal probability of starting from each market. जो उसकी real probability होगी तो वो कुछ भी हो सकती है, आपके घर से उनका फासला हो सकता है, जो पहले करीब है आप वहाँ पहले जाएंगे, या आपकी ज़रूरत हो सकती है आज के दिन आपको सबसे ज़्यादा पेट चाहिए, फूड चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम assume कर रहे हैं कि you can start from any one of these markets and then you will start buying pets, foods and electronics. You will keep moving from market to market, and then at the end you will give me a sequence of purchases. So जिसके अंदर pet, food, electronic food, pet, whatever, एक sequence होगा जो आपने चीज़ें खरीदी हैं, एक तरतीब में खरीदी होंगी, and then I want to let's say guess कि आप किस तरतीब से मार्केट्स में गए थे। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ाते हैं ताकि इसके अंदर कुछ ना कुछ इतनी कॉम्प्लिकेशन आए जितनी हमें HMM के लिए ज़रूरत है। So this is the state of the world. These are the three markets: the food street, the electronics market, and the pet market. So these are the three states जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Now I want to find out first of all the probability of going from one state to the other state. पहले इसको निकाल लेते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, फिर प्रॉब्लम को बाकी आगे और बढ़ाएंगे। So what's the probability of going from let's say pet market to food street to let's say electronics market and so on and so forth. So हमने ये नीचे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली है जहाँ पे यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम में लिखे हुए हैं ये फ्रॉम है, और ये जो इधर लिखे हुए हैं हमारे पास ये टू है। ठीक है, सो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? वी कुड
either it could be an inverse of the distance, जो चीज़ करीब है वो ज़्यादा probable है कि आप वहाँ जाएंगे, road conditions जहाँ की सड़क ख़राब है कम probability है कि आप वहाँ जाएंगे, safety for example इधर रास्ते में चोरी डाका होता है, आप उस मार्केट से उस मार्केट का रास्ता नहीं अपनाते, whatever. हम सिंपली ये करते हैं कि हमने एक मार्केट में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट खड़े हुए और सर्वे करना शुरू कर दिया कि वो सारे लोग जो इस मार्केट से आज निकलते हैं उनमें से कितने जो हैं वो पेट मार्केट जाते हैं, कितने फूड स्ट्रीट जाते हैं और कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वापस आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, और इससे हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इन प्रोबेबिलिटीज को. So we could, so what I'm trying to say here is that the probabilities could come from any source. The important thing for understanding these concepts that we want to understand is that we have a probability which is reasonable. All right. So you can see here that I have this matrix and then I have just calculated the number of people on a particular day जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से निकले और वापस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आ गए, यू टर्न लेके आ गए लेट्स से, ठीक है, और कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से निकले और पेट मार्केट चले गए, कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से निकले और फूड स्ट्रीट चले गए. सो द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि हमारे सोर्स से इस दिन निकले हैं ये 100 है. आउट ऑफ दोज 100 10 वापस आ गए थे, 50 यहाँ पेट मार्केट चले गए थे और जो है 40 फूड स्ट्रीट चले गए थे. ओके, सिमिलरली फॉर द पेट मार्केट 95 लोग निकले यहाँ से टोटल, जिसमें से 60 इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गए, 10 वापस आ गए और 25 जो है फूड स्ट्रीट चले गए. सिमिलरली 280 लोग निकले फूड स्ट्रीट से, जिनमें से 70 वापस जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चले गए, 200 पेट मार्केट चले गए और लेट्स से 10 जो है वो वापस फूड स्ट्रीट आ गए. You understand the matrix now? Now can we convert this matrix into probabilities? Of course we can. We just divide, we just normalize each of these numbers of people who go from one market to the other, and we just normalize it using the total number of people that came out of this market. By the way, आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ तक हम simple bigram models construct कर रहे हैं of going from one state to the other state. Good. If you understand this, it's good. All right. So and here are the probabilities. So the sum of outgoing arcs, the arc from electronics market, the sum of arcs which originate from this electronics market and go to every other place, the sum of the probabilities would be 1, and the individual probabilities would be these जो कि मैंने यहाँ पर निकाली हुई हैं count से. All right. So पहली चीज हमें समझ में आ गई, we have constructed the transition probabilities and so we have our Markov chain now. जो आप पिछली स्लाइड में देख कर आए हैं, that was your Markov chain. वो जो matrix आपको नजर आ रही थी, that was essentially the complete Markov chain जिसकी आपको जरूरत थी, the complete bigram model of going from one market to the next. Now let's look at the second type of probabilities. ठीक है, और हम यहाँ पर बात करते हैं अब अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की. सो हम एज्यूम करते हैं थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि ये सारी मार्केट्स मिक्स्ड हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू रियलिटी. ऐसा नहीं होता कि हफीज सेंटर में एक भी खाने की दुकान नहीं होगी. ऐसा होता है कि वहाँ पेट्स की दुकान नहीं होती, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर आवर प्रॉब्लम कि वहाँ पे 2-3 जो है ना वो पेट्स की दुकानें भी हैं. सो लेट्स एज्यूम our electronics market is composed of 70% electronics shops, 10% pet shops and 20% food shops. ठीक है, सिमिलरली पेट मार्केट में 5% इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, 80% पेट शॉप्स हैं, 15% फूड शॉप्स हैं. सिमिलरली फूड स्ट्रीट के अंदर जो है वो 30% इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स भी हैं, 10% पेट शॉप्स भी हैं, दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग फूड स्ट्रीट, एंड 60% फूड शॉप्स हैं. ये अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है. सो नाउ वी वांट टू एसेंशियली फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से बाइंग अ पैरेट in an electronics market, or the probability of eating a burger in let's say a food in a food street, or probability of eating a burger in let's say a pet market, or probability of eating a burger in let's say electronics market. So burger, I'm just saying it a name, it's food, so probability of having food in one of these markets, right? So we can just estimate those probabilities by these fractions कि किस मार्केट में कितनी परसेंट दुकानें उस टाइप की हैं. हम और हम लाइफ में भी यही कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ जी मैं आज खाना खाने जा रहा हूँ, तो आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे अच्छा खाना खाने आप पेट मार्केट जा रहे हैं. आई होप यू डोंट थिंक कि मैं जो है वो कोई इस तरह का हूँ कि मैं पेट मार्केट में उस तरह का खाना मिलेगा जो मैं खाता हूँ. बट या यू विल एज्यूम कि हम किसी खाने की जगह जा रहे होंगे, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और पेट मार्केट, राइट? तो हम ये कहाँ से एज्यूम करते हैं? क्योंकि उस मार्केट पे ज़्यादातर दुकानें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं. व्हाई वुड यू गो देयर टू हैव फूड? तो हमारे जहन में भी जो मॉडल है वो यही है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा दुकानें हैं वो उस चीज़ की मार्केट है, वहाँ पे वही चीज़ की जाती है. ऑल्दो कि वी नो कि उन मार्केट्स के अंदर लेट्स से हफीज सेंटर में जैसे मैंने कहा खाने पीने की दुकानें हैं. सिमिलरली पेट शॉप के पेट मार्केट के अंदर भी खाने पीने की हो सकता है, कोई बर्गर वाले की दुकान हो, कोई फलां की दुकान हो, होंगी, लेकिन वो इसलिए मशहूर नहीं है. तो हम वही अजम्पशन यहाँ भी ले लेते हैं कि इन प्रॉबिलिटीज़ को इन फ्रैक्शन से एस्टिमेट कर लेते हैं.
All right, so these are what we call our emission probabilities. ये नाम है जो हम HMMs में use करते हैं, emission probabilities. So we talk about two types of probabilities: the transition probabilities, the probability of going from one state to the next, and the emission probabilities, the probability of observing a particular specimen in a particular state. In this case, the probability of let's say having electronics or pets or food in a particular market. So ये तीन मार्केट्स हैं आपके पास, और उनमें से आप ये इन तीनों में आप ये देखना चाहते हैं कि इन तीनों किस्म के कामों की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो इफ यू आर स्टैंडिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इज 0.70. हमने सिंपली इसको एस्टिमेट कर लिया नंबर ऑफ शॉप्स जो वहाँ पर हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से कि उसमें कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं. हम किसी और तरह भी कर सकते थे, कितने लोग जो वहाँ आते हैं रोजाना वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं. इट डजंट मैटर, वी जस्ट हैव अ प्रोबेबिलिटी एंड दैट्स व्हाट मैटर्स एट दिस पॉइंट. ऑल राइट, और पेट लेने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से और फूड लेने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से. सिमिलरली पेट मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की प्रोबेबिलिटी, पेट्स खरीदने की प्रोबेबिलिटी, फूड खरीदने की प्रोबेबिलिटी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो नाउ वी हैव दीज टू matrices, the transition probability matrix and the emission probability matrix. A simple Markov model just has this one transition probability matrix. The probability of going from electronics market to electronics market, the probability of, let's say, going from electronics market to pet market, the probability of going from electronics market to food street, and so on. Just transition probabilities, and that's what's known as a Markov chain or a Markov model, जो हम देख कर आए. और हमने देखा है कि ये सीक्वेंसेस को प्रोबेबिलिटीज देने के काम आ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि मैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गया और उसके बाद पेट मार्केट गया और उसके बाद फिर पेट मार्केट गया और फिर पेट मार्केट गया और फिर फूड स्ट्रीट गया और फिर पेट मार्केट गया और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गया. इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बताएं, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट यूजिंग दिस मैट्रिक्स, यूजिंग द चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटीज. सो दैट्स योर मार्कov मॉडल. Now the enhanced Markov models, the hidden Markov models, जिसके अंदर हम दो सीक्वेंसेस को अलाइन करना चाह रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो दो मेट्रिसेस पे बेस्ड होती हैं. सो दिस इज योर हिडन मार्कov मॉडल. और अब यहाँ से टर्मिनोलॉजी अलर्ट, क्योंकि अब हम कुछ यहाँ पर चीज़ों को ना अब नाम देना शुरू कर देंगे, और वो नाम मैं कंसिस्टेंटली कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट एचएमएम की पूरी वीडियोस में वही नाम यूज़ करूँ. सो हम हिडन मार्कov मॉडल को लैम्डा से इंडिकेट किया करेंगे. सो व्हेनेवर आई से लैम्डा, इट मींस अ पर्टिकुलर ट्रेन्ड हिडन मार्कov मॉडल विद इट्स ओन प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, इसके अंदर दो तरह की प्रोबेबिलिटीज हैं. एक वो जो मार्कov चेन में भी थी, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, दीज आर द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं. और जब एक प्रोबेबिलिटी लिख रहे होते हैं, लेट्स से गोइंग फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट जे, तो उसको स्मॉल ए आई जे लिखते हैं हम. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर स्मॉल ए आई जेज. सो देयर हियर आई इज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एंड जे इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट. ठीक है, अच्छा जनाब. सो इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से हमें क्या मिल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन आई गिवन लोकेशन आई माइनस वन. सो दिस इज योर transition probability matrix, right? And the second matrix that you are interested in is known as the B matrix, ये नाम भी याद रहे, which gives you the probability of observation I given location I. यानी आपने इस मार्केट में जाकर ये वाला पर्टिकुलर काम किया, ऑब्जर्वेशन की, यानी आपने पेट खरीदा या फूड खरीदा या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, गिवन लोकेशन आए, यानी आप गिवन के आप किस मार्केट के अंदर थे. ठीक है, सो these are known as the emission probabilities. You indicated by B. और फॉर एग्जांपल किसी एक लेट्स से स्टेट J के अंदर ऑब्जर्वेशन T की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं BJOT. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ BJOT, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन OT क्या है? ऑब्जर्वेशन O है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा गया, और BJ क्या है? सो दिस इज बेसिकली हमारे पास J जो है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है. इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी, ये और ये वाली प्रोबेबिलिटी है. दिस इज बी सबस्क्रिप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, और यहाँ पर अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियर. या आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा. लेकिन याद करना इसलिए ज़रूरी है कि एल्गोरिदम में बार बार ये टर्म्स यूज़ होनी है. तो मे बी पॉज द वीडियो, स्टेयर एट इट, हम कहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, ए क्या है, बी क्या है, स्मॉल ए क्या है, लार्ज ए क्या है, एंड सो ऑन. ये टी मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया, टी मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि टी क्या चीज़ है. ओ इज़ द ऑब्जर्वेशन, टी इज़ द टीएथ ऑब्जर्वेशन इन द सीक्वेंस. बट खैर ये अभी मैंने फॉर्मली इसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आगे जाके कर दूंगा. So this is your hidden Markov model. So the hidden Markov model has two types of probabilities: the probability of going from one state to the next, and the probability of observing a particular observation in a particular state. And it's a product of these two probabilities. All right.
So this is your hidden Markov model, and these are the components of the hidden Markov model. You have the states. So in this case हमारे पास, और अब ये याद रहे मैं जो जो यहाँ पर इसके लिए टर्म्स यूज कर रहा हूँ. सो लैम्डा मेरा हिडन मार्कov मॉडल है. स्टेट्स में मेरे पास 3 स्टेट्स हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इसको मैं कैपिटल ई से लिखूंगा. पेट मार्केट, इसको मैं कैपिटल पी से लिखूंगा. फूड स्ट्रीट, इसको मैं कैपिटल एफ से लिखूंगा. और अल्फाबेट्स या ऑब्जर्वेशंस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा जा सकता है, फूड खरीदा जा सकता है, पेट खरीदा जा सकता है. इनको मैं स्मॉल लेटर से लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड और पेट. You have your transition probabilities, your capital A, and your emission probabilities, your capital B. ये दोनों matrices हैं पूरी पूरी जो अभी हम देख कर आए. And then you have a special start state Q naught and a special end state QF. इनकी कोई emission probabilities नहीं होती. Start और end state को हम assume करते हैं कि इस पे हमने कुछ खरीदा नहीं है, ये मार्केट नहीं है. फर्ज करें आपका घर है. सो यहाँ से आप पेट खरीदने की और फूड खरीदने की और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की कोई प्रॉबिलिटी नहीं होती. यहाँ से सिर्फ प्रॉबिलिटी डिफाइन होती है कि इस स्टार्ट स्टेट से लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जाने की प्रॉबिलिटी कितनी है, फूड स्ट्रीट जाने की प्रॉबिलिटी कितनी है, लेट्स से इससे पेट मार्केट जाने की प्रॉबिलिटी कितनी है. सो यू जस्ट लर्न द प्रॉबिलिटीज ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम और टू. जैसे कि फाइनल स्टेट में होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से घर जाने की यानी फाइनल स्टेट पे जाने की प्रॉबिलिटी कितनी है, फूड स्ट्रीट से जाने की कितनी है और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से जाने की कितनी है, लेट्स से. तो ये हमारी दो स्टेट्स होंगी. इन दोनों के ऊपर एमिशंस नहीं होती, इन दोनों के ऊपर कुछ खरीदा बेचा नहीं जाता, इनके ऊपर सिर्फ जो है वो जाया जाता है या इनसे आया जाता है. ठीक है. आई होप दिस इज नाउ गेटिंग अ लिटिल बिट क्लियरर एज वी आर गोइंग अलोंग, और चीजें कुछ कुछ समझ आती जा रही हैं. ऑलराइट, अब हम आते हैं असल क्वेश्चन की तरफ. कि इस HMM के बारे में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो क्या पूछे जाते हैं. गिवन अ सीरीज ऑफ परचेजेस. फर्ज कीजिए कि मैं आपके पास क्लास में आया और मेरे पास हाथ में कोई 3 तोते के पिंजरे थे, कोई आई डोंट नो 2 मैंने मुर्गियां पकड़ी हुई थी, और एक थैले के अंदर जो है वो खाने पीने की चीज़ें अलग अलग भरी हुई थी, बर्गर्स भी थे और आई डोंट नो उसमें कुछ और कोई फल भी थे और चीज़ें भी थी. और मेरे साथ जो है ना वो एक मेरा स्टूडेंट जो है या मेरा एक दोस्त जो है वो मेरे साथ हेल्प कर रहा है, और वो 2 3 4 LED टीवी और 1 2 आई डोंट नो स्पीकर्स और चीज़ें भी उठा के ला रहा है. और मैंने कहा कि जी मैं ये सब खरीद के लाया हूँ, और ये इस तरतीब में खरीदा है, हर एक पे नंबर लगा हुआ है. सबसे पहले ये खरीदा है, फिर ये खरीदा है, फिर ये खरीदा है, फिर ये खरीदा है. तो लेट्स से ये बर्गर खरीदा है, फिर मैंने टीवी खरीदा है, फिर मैंने बर्गर खरीदा है, और फिर मैंने उसके बाद लेट्स से जो है वो स्पीकर खरीदा है, और उसके बाद मैंने कबूतर खरीदा है, और उसके बाद मैंने फिर खाना खरीदा है, और फिर मैंने तोता खरीदा है, एंड सो ऑन. ये तरतीब मैंने आपके सामने रख दी है. लेट्स से ये एक ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस है जो लिखा हुआ है. सो पेट, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, पेट. ये एक ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस है. Now the 3 different questions that we can ask, the interesting questions that we can ask about this, और अब हम बिल्कुल स्पॉट ऑन आने लगे हैं. तो अगर कोई भी चीजें आपके जहन में क्लियर नहीं थी, इस स्लाइड पे इंशाल्लाह everything would be perfectly clear कि ये HMM पढ़ क्यों रहे हैं. We can ask 3 different types of questions. The first question is the probability of this sequence given our HMM, यानी given the state of the world. State of the world क्या मतलब, जिसमें हमने probabilities define की हुई हैं कि transition की क्या है और emissions की क्या है. Given that HMM, what's the total probability, what's the likelihood of this sequence. ये वही चीज़ है जैसे हमने Markov chain में देखी थी कि we can assign probabilities to sequences. So likelihood question is the probability of this sequence, probability of observation sequence O given our hidden Markov model lambda. So this will be the total probability of this sequence. आप इसको पूरे को probability assign कर दें कि चाहे मैं किसी भी set of market से होता हुआ गया हूँ, इस बात की क्या probability है कि मैंने इस तरतीब से आज शॉपिंग की है. And you can see, you can intuitively see कि कुछ चीज़ें ज़्यादा probable हैं, कुछ कम है. शायद ये ज़्यादा probable है कि मैं एक दफ़ा में गया और एक ही मार्केट से सब कुछ खरीद के फिर दूसरी मार्केट गया, वहाँ से सब कुछ खरीदा, फिर तीसरी. शायद ये ज़्यादा probable हो, शायद ना हो. शायद ऐसा भी हो कि मुझे कोई एक चीज़ खरीदने के बाद किसी दूसरी जगह जाना पड़ता हो और फिर वो दिखाकर वहाँ से आना पड़ता हो. Whatever. The real world probabilities could encode anything. जो हमने रियल वर्ल्ड की probabilities अभी देखी थी, कैलकुलेट हमने तो एक तरह की है ना, किसी और तरह भी हो सकती थी. लोगों से पूछते कि आप पहले ये खरीदते हैं फिर वो खरीदते हैं, तो वो हमें हो सकता है कोई सीक्वेंस बता देते कि भाई मैं उस वक्त तक नहीं शॉपिंग कर सकता जब तक मैं खाना ना खाऊं, और यहाँ का खाना मैं खाता हूँ पेट मार्केट का लेट से, तो मैं बीमार हो जाता हूँ, इसलिए पहले फूड स्ट्रीट जाता हूँ, वहाँ से खाया, आधी शॉपिंग पेट मार्केट में कर ली थी, फिर पेट मार्केट वापस आया. और जब तक मैं, या एक शख्स ये भी कह सकता है कि मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लेता हूँ, पेट्स को ज़्यादा देर में गाड़ी में रख नहीं सकता, तो पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता हूँ, फिर बाद में मैं खाना खा के फिर पेट्स खरीदता हूँ. whatever, like it could be anything, right? So this is the likelihood question, the probability of a particular sequence. The second question is the decoding question. What's that question? The question is the most probable sequence of markets visited given this observation sequence. Given this observation sequence, what's the most probable sequence of markets visited? यानी state sequence चाहिए आपको. Given the observation sequence, you want to find the most probable state sequence. अब अगर आप गौर करें, this is the speech recognition question. The probability
of a particular of the states कि किस of state sequence given the observation sequence. This is your speech recognition problem. In your speech recognition problem आप observe क्या करते हैं? Frames. आप बताना क्या चाहते हैं? States क्या होती हैं? Phonemes. So sequence of phonemes बतानी है आपने given sequence of frames. और ये क्वेश्चन को हम डिकोडिंग क्वेश्चन कहते हैं. डिकोडिंग क्वेश्चन हमारे केस में यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ पेट्स, जो सीक्वेंस ऑफ शॉपिंग जो आपने खरीदी हैं चीज़ें, ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है. और ये क्या है, क्यू क्या है, कौन सी मार्केट से. ठीक है, अब आपको ये भी समझ आ रहा है कि मैंने ये एग्जांपल क्यों बनाई है. रादर देन टॉकिंग अबाउट स्पीच रिकग्निशन एंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रेम्स और ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी नहीं आती, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपली बाइंग स्टफ फ्रॉम मार्केट्स. सो दैट्स व्हाई आई कंस्ट्रक्टेड दिस एग्जांपल. ऑलराइट, सो दिस इज द डिकोडिंग प्रॉब्लम. द प्रोबेबिलिटी ऑफ and let me just make it cleaner for the slides. The probability of uh, probability of state sequence given observation sequence. Okay? And then there is a third question, and which is a very important and I think the trickiest of the three questions, the learning question. Given an observation sequence O and the set of states in the HMM, learn the HMM parameters A and B. मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं आपके सामने एक बहुत से लोगों की या एक ही शख्स की बहुत ज़्यादा परचेजेस लेकर आ जाता हूँ कि जी बस सिर्फ ये पता है कि इस तरतीब में चीज़ें खरीदी गई हैं और ये भी पता है कि टोटल मार्केटें कितनी हैं. ये नहीं पता कि किस मार्केट में पेट शॉप्स हैं, किस मार्केट में फूड स्ट्रीट्स हैं, किस मार्केट में क्या, ये नहीं पता. बस पता है 3 मार्केटें हैं और ये पता है कि इस तरतीब में लोगों ने चीज़ें खरीदी. यू वॉन्ट टू लर्न the transition and the emission probabilities. You want to learn these two probabilities in an unsupervised manner, and that's the learning problem. और जो इसको हम solve करेंगे, ये this algorithm is essentially a very notorious algorithm of being complicated. इससे बड़ा डरते हैं students. It's known as the forward backward algorithm. It's also known as the Baum-Welch algorithm. ये or backpropagation in neural nets are the two mostly feared problems in machine learning, जिनसे बहुत ज़्यादा जान निकलती है जिसको पहली दफ़ा पढ़ा जा रहा होता है. और one of the reasons why I constructed this simple example was कि मैं इस Baum-Welch algorithm को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ. By the way, एक forward backward है और दूसरा back propagation है, नाम भी मिलते जुलते हैं, right? So इसको अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए ही असल में ये बनाई गई थी. जो पहले दो likelihood और decoding problems हैं, ये तो वैसे भी पढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है. तीसरा जो है learning problem, वो सीखना ज़रा मुश्किल है और मेरी कोशिश ये होगी कि हम उसको ज़रूर कवर करें learning problem को. All right जी. So before we move on, let's define a few conventions. आपको कुछ terms तो याद हो गई हैं, आप कुछ conventions define कर लेते हैं. Observations याद है, जो चीज़ें खरीदी गई हैं. So observation sequence के अंदर हम उसको हमेशा capital O से लिखा करेंगे पूरे sequence को, जिसके अंदर जो सब components होंगे O1, O2, O3, OT और O capital T तक होगा. So the sequence will go from O1 to OT. T वो है कि हमारे सीक्वेंस की लेंथ कितनी है. सो लेट्स से मैंने 10 चीज़ें खरीदी हैं तो सीक्वेंस की लेंथ 10 है, सो कैपिटल T इज 10. ठीक है, and these O's are each individual purchases. Let's pet, electronic, small वाले जो letters थे ना, ये वो हैं. ठीक है, so let's say your pet, your electronics, and then let's say food, whatever. And this small t is basically an index into this whole thing. So small t से हम indicate करेंगे, so इसको time भी कहते हैं हम. It's the index in the sequence. ठीक है. And then दूसरी चीज जो हमारे पास होगी वो state sequence. So this is the observation sequence and the other thing is the state sequence. The state sequence जो हमारे केस में मार्केटें थी. So these are your states. So the electronics market, let's say the food street, and let's say this is the pet market, and so on and so forth. So this will go from 1 to n. हमारे केस में जो example है उसमें ये चीज़ें 3 हैं, 3 markets हैं. So capital N is 3. अगर हम लेट से बात कर रहे होते उर्दू की साउंड्स की तो इसमें हमारे पास ये होती 65. सो कैपिटल N वुड हैव बीन 65. ठीक है, और इसके अंदर जो इंडेक्स है वो हम K आमतौर पर यूज़ करते हैं. ऑलराइट, सो जब हम इसको बनाया करेंगे तो हम इस तरह बनाया करेंगे. ये आपके पास ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें खरीदी गई हैं, ये पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है. और ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स लिखी हुई है. आमतौर पे हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं 1 to n. उर्दू की सारी साउंड्स, हमारी सारी मार्केट्स. सो इसेंशली आप निकालना ये चाह रहे हैं कि गिवन ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशन आई है, इनमें से कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा प्रॉबल स्टेट है इसके लिए, क्योंकि इन दी एंड आपको एक स्टेट सीक्वेंस देना पड़ सकता है, आपको इसका टोटल प्रॉबिलिटी देनी पड़ सकती है ये कुछ. एंड दिस इज़ योर स्टार्ट स्टेट एंड योर एंड स्टेट. इस पे कोई ऑब्जर्वेशन मैप नहीं होती है, इन पे कुछ खरीदारी नहीं हो रही होती. ठीक है, आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियर. मे बी स्टेयर एट इट फॉर अ व्हाइल, पॉज इट, spend a few minutes looking at it, and then let's move on.
ऑल राइट, सबसे पहला क्वेश्चन द लाइक्लीहुड क्वेश्चन, यानी अब हम एक सीक्वेंस को प्रोबेबिलिटीज असाइन करना चाहते हैं यूजिंग बोथ द एमिशन एंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। तो इसके लिए पहले मैं आपका थोड़ा सा माइंड बनाना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटीज निकलती कैसे हैं। Let's assume an example. Given two fair dice that are thrown simultaneously, दो fair dice हैं जो आपने simultaneously फेंके, let's say black dice और एक white dice है. What's the probability of getting a 3? क्या टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो आप करेंगे क्या, आप कहेंगे अच्छा अगर एक पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, या फिर ब्लैक पे 1 आए व्हाइट पे 2 आए, या ब्लैक पे 2 आए और व्हाइट पे 1 आए। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जिससे आपका टोटल 3 आ सकता है। सो ये आपने कहा कि ओके 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1 ब्लैक और व्हाइट के ऊपर। सो जब द टोटल लाइक्लीहुड ऑफ दिस outcome is probability of sums to 3 is equal to probability of 1 and 2 plus probability of 2 and 1। ठीक हो गया जी, यानी एक पे 1 और एक पे 2, एक पे 2 और एक पे 1, इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ये इवेंट होने की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम्स टू 3 इज एसेंशियली 1/36 plus 1/36 over 2/36 which is 1/18। So the likelihood question is answered using the sum of all probabilities of getting this outcome। ये जहन के अंदर बात को जरा महफूज कर लें, ठीक है, कितनी आसान है ये बात। यही मुश्किल लगने लगती है जब मैं HMM की टर्म्स में इस बात को करूंगा कि the total probability of observing a sequence is essentially all the sum over all possible ways you can get that sequence, you can have that sequence given your HMM। ये बेसिकली यहीं तक पहुंचना है। इस सिंपल एग्जांपल को ज़हन में बिठा लें तो अगली वाली चीज आपको बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी। All right, so the likelihood of a state sequence. So when we ask for the likelihood of a state sequence, for example, Q is equal to EFP, अगर मैं खाली state sequence की probability पूछ रहा हूँ, what's the probability कि मैं electronics market गया, फिर food street गया और फिर pet market गया, what's the probability of this state sequence, कैसे निकलेगी? The likelihood is computed as probability of E into the probability of F given E into the probability of P given F। ठीक है, इन तीनों को हमने चेन रूल से प्रोबेबिलिटीज निकाली और यू कैन सी कि ये सिंपल मार्कऑफ चेन से निकलती हैं, राइट। However, the probability, the likelihood of an observation sequence given a state sequence is the next question, right? So अगर हमें state sequence given हो, for example हमें पता है कि हम पहले electronics market गए, फिर food street गए, फिर pet market गए, और ये भी पता है कि क्या खरीदा गया है। So let's say when we ask for the likelihood of an observation sequence and the state sequence is known, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं basically ना step by step build करना चाह रहा हूँ, मैं सीधा I don't want to throw the likelihood algorithm at you, I want to build it up। So पहले मैंने coin की आपको वो dice की example दी है, अब मैंने आपको उसके बाद फिर खाली state sequence की probability की example दी है। अब हम state और observation sequence को मिलाकर उसकी probability की example देख रहे हैं जहाँ state sequence known है, ठीक है। So the observation sequence let's say is pet food food and the state sequence is known to be, मैंने आपको खुद ही बता दिया, is electronics food pet। अब गिवन दीज टू आप मुझे बताइए कि इस सब कुछ की क्या प्रोबेबिलिटी, मीनिंग मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूछ ही रहा हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने पेट खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से, फूड खरीदा है फूड स्ट्रीट से, फूड खरीदा है पेट मार्केट से, और साथ साथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर टू हियर and starting from here। So the probability of starting from here into the probability of buying pet from here into the probability of and so on and so forth। So अब ये मेरी total probabilities हैं। अब जरा इसको देख लेते हैं क्या है। So the likelihood is computed as the probability of starting from the electronics market into the probability of buying pet from the electronics market। अब मैं ये थोड़ा सा इसको मिटाकर दोबारा लिखता जाता हूँ ताकि आपको साथ साथ मैपिंग होती जाए। All right, so the probability of starting from the electronics market into the probability of buying a pet from the electronics market into the probability of next going from the electronics market to the food street and then buying food from the food street and then going to the pet market and then buying food from the pet market। This is the total probability of these two sequences combined। जी समझ में आ रही है? अब आपको यानी देखें कितने आराम से ये भी समझ में आ गया कि अगर मेरे पास दो सीक्वेंसेस है, मैं उनको अलाइन करना चाहता हूं और उसके बाद देखना चाहता हूं कि इस अलाइनमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस के 5 अलग अलग सीक्वेंसेस के साथ अलाइन करके देखना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट अलाइनमेंट किसके साथ आती है, तो मैं इसको पहले के साथ अलाइन करके प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा, दूसरे के साथ करके निकाल लूंगा, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, और उसके बाद उनका मैक्स ले लूंगा और वो सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। द मोस्ट लाइकली, द मैक्सिमम लाइकलीहुड सीक्वेंस गिवन अनदर सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? आई होप यूर विद मी और आई होप कि अब आप एंजॉय करना शुरू हो गए होंगे इस चीज को। ठीक है, तो कि हाउ पावरफुल दिस टूल इज जो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे आंखों के सामने अनफोल्ड होता नजर आ रहा है। नाउ द बिग क्वेश्चन, likelihood of an observation sequence। When we ask for the likelihood of an observation sequence and the state sequence is not known, state sequence नहीं पता,
नहीं पता किस तरतीब से मार्केट्स में गया, बस ये पता है कि ये चीज़ें खरीदी हैं, ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस पता है, मैंने पेट खरीदा, फूड खरीदा, फूड खरीदा, व्हाट्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस, कैसे निकलेगी? पॉज करें, सोचें ज़रा इस बात के ऊपर। अगर आप इस तक खुद पहुंच गए ना, आपका कॉन्फिडेंस 0 से 99 पे पहुंच जाएगा। Probabilities की आदत हो गई है ना, इसलिए I'm not saying 0 to 100. I should probably have said 1 to 99, but yeah, it's too late now. All right. Try to answer this question. What would be the likelihood of this observation sequence given your hidden Markov model? How would you calculate it? I hope आपने pause किया. अब जरा मिलके इसको समझते हैं. The likelihood is the sum of likelihoods over all possible state sequences. करना क्या पड़ेगा? आप सारे possible state sequences निकाल लें. Electronics, 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 food, यानी market. So electronics, electronics, pet market, electronics market, electronics market, फूड स्ट्रीट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे के सारे आप सीक्वेंसेस निकालें, इन सब के ऊपर ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी निकालें और फिर उस सब का सम निकाल लें, इज द टोटल लाइकलीहुड कि ये सीक्वेंस आने की क्या प्रोबेबिलिटी, यानी मैं रिगार्डलेस कि मैं कहाँ कहाँ से इस चीज़ को खरीदता हुआ गया हूँ, व्हाट्स द टोटल प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ एफ गिवन लैम्डा इज इक्वल टू ये तीन चीज़ें, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस गिवन, ये जो मेरे पास सारी की सारी स्टेट्स हैं, कैसे निकलेंगी? P से P, P से P और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी। सो वी नो कि किस तरह से निकालते हैं ट्रांजिशन और एमिशन। उसके बाद ये वाला इसमें सम कर दें, उसके बाद ये वाला इसमें सम कर दें। ये आपके पास एक पाथ आ गया कि हमने यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली, इसमें इस प्रोबेबिलिटी को सम किया, इसमें इसको सम किया, उसके बाद इसमें इसको सम किया, इस सब कुछ को सम किया, इसको सम किया, यानी इन अदर वर्ड्स आपने सारे पाथ से प्रोबेबिलिटीज निकाली और उन सबको सम कर दिया। इसी को देखने का एक और अंदाज भी है, इसको देखने का ये अंदाज भी है। सो आप निकाल रहे हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ एफ गिवन पीपीपी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ एफ गिवन पीपीई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ एफ गिवन पीपीएफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ एफ गिवन पीईपी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ एफ गिवन पीईई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ एफ गिवन पीईएफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So you go over all of the possible, so you look at all possible state sequences and you find the total probability of observing this sequence. This is the likelihood of this sequence. This is how likely this sequence is. ठीक है? अच्छा जनाब, अच्छा ये computationally थोड़ा औखा लग रहा है. The computational cost seems to be high. Can you find out the computational cost of this in terms of the number of states and the length of the observation sequence? कोशिश करें जरा. आपके पास n ऑब्जर्वेशन, n आपके पास स्टेट्स हैं और t कैपिटल T आपके पास जो है वो लेंथ है आपकी ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस की. व्हाट्स द टोटल कॉस्ट, कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटेशन? It will come out to be states, number of states raised to the power of number of observations, which is n raised to the power t. ठीक है, समझ में आ रहा है? So this is exponential. This is very expensive. अगर ये हम करने लग जाएं for long sequences like for उर्दू के 65 phonemes और उसके बाद let's say एक फाइल जिसके अंदर 10,000 आपके पास जो है वो frames हैं, so now you can calculate के how expensive this would be. ये तो वापस ही नहीं आएगा. ठीक है, बहुत देर में आपको इसका आंसर मिलेगा और वो देर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है. ऑल राइट, सो दैट मीन्स वी नीड अ बेटर एल्गोरिदम एंड वी हैव एन एल्गोरिदम ऑलरेडी जिसको हम पहले DTW में बहुत अच्छी तरह से सीख कर और यूज़ करके आए हैं, एंड दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू द रेस्क्यू. All right, so dynamic programming, let's really quickly revise. क्या था उसका concept? The best collective is composed of best individuals. That was dynamic programming. So suppose we're creating a team of 100 best people. एक और example देता हूँ, so मैंने कुछ और दी थी. 100 best people with one member from each city. So फर्ज करें हमारे पास 100 cities है, हर एक में हजार लोग हैं और मैं बनाना चाहता हूँ एक टीम 100 बेस्ट लोगों की. तो दो तरीके हैं इस काम को करने के. अच्छा, बेस्ट कैसे डिफाइंड हो सकता है? मैं कह सकता हूँ सबसे इंटेलिजेंट लोग या सबसे स्ट्रॉन्ग लोग या सबसे अखलाक वाले लोग, नाइस लोग, व्हाटएवर. And one way of finding such a team is to compare all permutations of all 1000 individuals from all cities, which is known as the brute force method. So 100 cities है, हर एक में हजार लोग हैं. पहला बंदा 100 cities के लिए ये एक सीक्वेंस है. पहला बंदा लेके आखिरी वाले का सेकंड ले लिया, एक और सीक्वेंस है. तो हमारे पास ये n रेज़ टू पावर t सीक्वेंसेस आ जाएंगे और इन सारे सीक्वेंसेस में से जो सबसे अच्छा सीक्वेंस होगा, मैं बेस्टनेस मेजर कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम हर सीक्वेंस की, वो सीक्वेंस में कह दूंगा ये मेरे दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अ टीम ऑफ 100 बेस्ट पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सिटीज. हर एक से एक आ रहा है. ठीक है, एक से एक दूसरा तरीका भी है. The दूसरा तरीका, the second mechanism which is based on dynamic programming is to choose the best from each of the 100 cities and form a team. This is what is known as dynamic programming. बजाय 100
n रेज टू पावर t सीक्वेंसेस के, यानी 100 रेज टू द पावर 1000 सीक्वेंसेस, 1000 रेज टू पावर 100 सीक्वेंसेस बनाने के, आप बड़े आराम से ये भी कर सकते थे कि आप हर एक में से जो है वो 100 के अंदर से बेस्ट आदमी चूज करते। लेट्स यूज में आपने 100 की इटरेशन की है हर दफा, और उन सब को आपने आखिर में एक दफा उन सब से आपने एक टीम बना दी। ठीक है, सो यू चूज द बेस्ट फ्रॉम ईच एंड देन यू फॉर्म द टीम। सो आपको t टाइम्स n का काम करना पड़ा है, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए आपको, यानी 100 लोगों के लिए हजार हजार लोगों के ऊपर जाकर देखना पड़ा है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। सो दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, मच लेस एक्सपेंसिव। तो ये जो पहला वाला था ये था 1000, सॉरी, n raised to power t, which is n, यहाँ पे आपके पास है the total number of individuals, yes, which is 1000 हर सिटी में, और आपके पास जो आपने जो पूरा सीक्वेंस निकालना है उसका t कितना है 100, सो ये 1000 raised to power 100 होगा। दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जो है वो 100 जगहों पर जाना है, यानी 100 आप टाइम्स जाना है हर एक सिटी के लिए एक दफ़ा, और हर एक में जाकर आपने 1000 लोगों को देखना है और उनमें से बेस्ट निकालना है। सो दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो दिस इज द डिफरेंस of the cost between the two. So I hope this is clear. This is dynamic programming, and this is the kind of improvement it gives you when you use it. ठीक है, and the second one is obviously very manageable compared to the first exponential one. अगर यकीन ना आ रहा हो तो एक दफ़ा कैलकुलेटर पे करके देख लें और देखें किसका आंसर आता है। All right. So now, similarly, dynamic programming can be used for creating paths. So the best path is composed of best components. The shortest path, best का मतलब अगर shortest ले लें, is composed of the shortest components. So methodologically, this requires remembering partial bests to construct the overall best. आप ये काम पहले करके आ चुके हुए हैं, आप मेमोराइजेशन करते हैं कोई टेबल या लिस्ट यूज करते हुए, और पार्शियल रिजल्ट्स को रिमेंबर कर लेते हैं। तो अब वो जो हमारा पूरा पाथ है ना, जो HMM में से गुजर रहा है, जो कि हमें टोटल लाइक्लीहुड दे रहा है, बजाय इसके कि हम सारे के सारे सीक्वेंसेस n रेज़ टू पावर t सीक्वेंसेस बनाएं और उनके ऊपर सम करें, हम ये कर सकते हैं कि हम हर t स्मॉल t के ऊपर, हर लेवल के ऊपर जाकर सम करते जाएं और सम को आगे मूव करते जाएं। दिस इज एसेंशियली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेट्स सी हाउ इट्स डन। ऑलराइट, so the likelihood question taken again, now using dynamic programming. अब ये किस तरह से होगा? Now the computation would be the probability of transitioning from P to P plus the probability of going from E to P plus the probability of going from F to P. अब ये P तक पहुंचने के, इस तक पहुंचने के सारे pathways हो चुके हैं। ठीक है, और जाहिर है कि अब आप ये 3 ट्रांजिशन probabilities हैं और यहाँ की एक emission probability है, इन सब को आप सम कर देंगे। So this gives you वन सम, पार्शियल सम जो इस पॉइंट आ गया। सिमिलरली आप एक और पार्शियल सम निकाल लेंगे इस पॉइंट पर, सिमिलरली आप एक और पार्शियल सम निकाल लेंगे इस पॉइंट पर। पार्शियल सम्स आ गए, अब पीछे जाने की जरूरत नहीं। नाउ यू जस्ट नीड टू गो फॉरवर्ड, यू कंस्ट्रक्ट अनदर सम और पिछले सम को बीच में इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, यू कंस्ट्रक्ट अनदर सम, यू कंस्ट्रक्ट अनदर सम, पिछला सम इंकॉर्पोरेट करते हुए, एंड देन you just find out the sum till the final state and you're done. So this, unlike the previous method, is just n multiplied by t. The number of states multiplied by the number of observations. जितनी observations है हर दफा जाकर एक एक स्टेट को एक एक दफा देखना पड़ा आपको, हर स्टेट को एक एक दफा देखना पड़ा। So n multiplied by t compared to the n raised to power t जो इससे पहले आप देख कर आए थे। Alright जी, clear हो रहा है? So now let's apply it to the actual problem, the pet in the pet market, food street and electronics market problem. By the way, this algorithm is known as the forward algorithm. नाम याद रखना है. This is known as the forward algorithm, and the probability that it gives you, the sum that it gives you, it's known as the forward sum or the forward probability. अभी हम इसको देखते हैं थोड़ी देर में. ऑल राइट जी, अब आपके सामने फॉरवर्ड एल्गोरिथम में पूरा चलाकर दिखाने लगा हूँ। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई कंस्ट्रक्टेड दी स्लाइड्स। इतने अच्छे तरीके से मुझे उस जमाने में जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था, मुझे नहीं कोई वीडियो मिली थी जिसमें सब कुछ हुआ हुआ हो। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दी स्लाइड्स की एक एक चीज़ का वॉक थ्रू हो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो आई विल जस्ट वॉक थ्रू दिस होल थिंग इनिशियली स्लोली एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको स्पीड अप करूँगा। हमने एज्यूम किया हुआ है कि Q0 से किसी भी स्टेट पर जाने की प्रॉबिलिटी इक्वल है। जब आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो अक्सर जगह इसको 0.33, 0.33, 0.33 किया होगा, एंड दैट्स मोर रियलिस्टिक। मैंने कैलकुलेशंस की आसानी के लिए इनको इक्वल करके 111 कर दिया। सो Q0 से बाहर जाने का जो सम है वो 1 नहीं है, ये वायलेट किया है रूल जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द एल्गोरिथम। यू विल आल्सो फाइंड एग्जांपल्स ऑफ दिस इन वेरियस प्लेसेस। लेकिन खैर अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मार्कऑफ चेन की सारे रूल्स को फॉलो करते हुए बनाना चाहते हैं तो आप इसको, जहां मैं 111 यूज करूंगा शुरू में इनिशियल स्टेट के ऊपर, आप वहां पे 0.33, 0.33, 0.33 कर दीजिएगा। दैट शुड ऑल्सो बी फाइन।
ठीक है जनाब. So you have your A matrix, which is the transition probabilities, the transitioning from E to E, E to P, E to F, and similarly P to E, P to P, and P to F, and so on and so forth. And you have your uh, emission probability matrix, which is the probability of buying electronics in electronics market, buying electronics in pet market, buying electronics in food street. Yeah, buying electronics in electronics market, pets in electronics market, and food in electronics market. ठीक है, सारी matrices clear हैं. All aboard, ready for takeoff. Let's do it. सबसे पहले हम इस पॉइंट पर पहुंचे एंड वी हैव आवर प्रोबेबिलिटी 1, यानी इस पर आने की, स्टार्ट स्टेट से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग P in state P. So observing P in state P. ठीक है, 1 multiplied by the probability of observing P in state E. P in state E. And similarly the probability of, ये जो तीसरे की probability भी आपने निकाल ली. All done? All with me? सब कुछ clear है? कोई मुश्किल मसला तो नहीं है? Alright, let's move on. Now you will find the probability of going from here to here. So this is 0.80. ये 0.80 क्या चीज़ है जो पीछे से आप साथ लेकर आ रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.11. 0.11 क्या चीज़ है? 0.11 ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, P से P जाने की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. And then ये 0.15 क्या चीज़ है? This is the emission probability of buying food in pet market. This is 0.15. तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास इस पाथ से ये प्रोबेबिलिटी आ गई. Add to it the probability of coming from this path. सिर्फ एक चीज़ अब यहाँ पर आप ये नोट कीजिए, 0.10 पिछला वाला, 0.50 ये ट्रांजिशन, एंड 0.15 F का इसमें होना. सो ये तीनों में कॉमन रहेगा 0.15. इन तीनों प्रोबेबिलिटीज के अंदर सेम आएगा ये. ठीक है, एंड सिमिलरली द थर्ड. सो इस पॉइंट तक पहुंचकर सम क्या निकलेगा? 0.03135. ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं. नाउ यू फाइंड द सेम प्रोबेबिलिटीज हियर एंड दिस सम, द प्रोबेबिलिटीज हियर एंड दिस सम. आपकी आसानी के लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ी सी देर तक ज़रा वीडियो पॉज कर करके इन मैट्रिसेस में से ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के अपने आप को कायल करते जाएं कि आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा. आई एम रनिंग द एल्गोरिथम फर्स्ट एंड शोइंग यू द एल्गोरिथम इन द जर्नल फॉर्म आफ्टरवर्ड्स, ताकि आपको क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए. ठीक है, अब हमने ये एफ को, लास्ट एफ को जो है ये कंज्यूम किया, और अब इस पाथ से आने वाली प्रोबेबिलिटी, पिछला सम आपने यूज़ किया है ये वाला, एंड देन transition probability of going from P to P and the emission probability F का P में से observe करना. ठीक है, all three probabilities यहाँ तक पहुँच गए, इस state तक सारी probabilities आ चुकी हैं. Now all you need to do is to go from here to the final state and find the total final probability. QF is equal to 0.02467, ये वाली probability प्लस ये वाली probability प्लस ये वाली probability. और अगेन हमने एज्यूम किया था कि इन स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने की probability जो है वो 1 है. अगेन ये वही वाली assumption है जो हमने शुरू में ली थी स्टार्ट स्टेट के ऊपर. आप यहाँ पर 0.33 ले सकते थे या कुछ और भी कर सकते थे. यहाँ तो खैर इसेंशली ज़रूरी नहीं था कि आप इसको करते. यहाँ 1 इज़ एक्चुअली, इट मेक्स सेंस बिकॉज इट्स द टोटल probability of going out of a particular state which is 1. तो इस केस में ये 1 की ट्रांजिशन probability is perfectly fine and safe, so you don't have a problem. जो जिस जगह मैंने आपको खुद ही एक्सप्लेन कर दिया था, जहाँ ये कॉशर नहीं थी, जहाँ ये सही नहीं थी, वो ये वाली जगह थी. यहाँ पर 0.33 would have been better but more complicated to calculate, so therefore I used a simpler calculation. And finally you have your final probability. This is the likelihood of this entire sequence given this HMM and using the forward algorithm. All right, so now let's look at the algorithm itself. अब ज़रा थोड़ा सा जहन खोल लीजिएगा. होपफुली अब तक आपको सब कुछ क्लियर है. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन इट्स जर्नल फॉर्म. यहाँ पर आप देख सकते हैं, let me use a black this time and red. All right, so alpha is the forward probability. So alpha हम यूज़ करते हैं forward probability इंडिकेट करने के लिए. Alpha 1j, इसका क्या मतलब है? 1 का मतलब है यहाँ पर t, so t is equal to 1. In this case your t is equal to 1 and j कि आप कौन सी स्टेट को देख रहे हैं, जो j goes from 1 to n. So हर एक की इनिशियलाइजेशन जो आपने की है वो आपने इनिशियल स्टेट से Q0 से जो हमारी फर्स्ट कॉलम था, ये उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है. सो दिस इज
A0J, the transition probability of going from start state Q0 to J, यानी आपकी 1 से लेकर n तक जिस भी आप स्टेट के ऊपर जा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय BJO1, BJO1 J यानी jth स्टेट पर जाकर जो एमिशन प्रोबेबिलिटी है इस ऑब्जर्वेशन O1 को कंज्यूम करने की। ठीक है, सो ये आपने इनिशलाइज किया, जो हमने, अगर आपको याद हो, जो शुरू में ये 3 बने हुए थे ना, Q0 से आकर ये 3 में जो जाना था, ये वो वाली प्रोबेबिलिटीज इनिशलाइज की हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पिछली स्लाइड में जाकर अपने आप को फर्दर इस पे कायल कर लें। अच्छा जनाब, नाउ द रिकर्जन सिंस स्टेट्स 0 एंड f आर नॉन एमिटिंग, उनके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं होती, सो अल्फा टी जे, अल्फा यानी द फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी, एंड देन टी आपका सीक्वेंस के अंदर आप कहाँ पर हैं, जे आप अपने स्टेट्स के अंदर कहाँ पर हैं। सो you sum over all of the states I is equal to 1 to n alpha t minus 1. So पिछले में जहाँ जहाँ से आप आ रहे हैं n states में से उनका अल्फा लेकर आए इस पॉइंट के ऊपर। सो अल्फा t t minus 1 i जो इस स्टेट पर आने के लिए, यानी अगर आप ये देखें इन सारी जगहों से आप आ रहे हैं, सो दिस इज योर, यहाँ से आप कोई ना कोई अल्फा t minus 1 लेकर आए होंगे, तो ये आपका अल्फा t minus 1 है। ठीक है जनाब, तो आपने पिछली वहां तक की एक्यूमुलेट हुई हुई फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम i to j मल्टीप्लाइड बाय द BJOT, उस पॉइंट के ऊपर कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी, उस लेबल को, जो उस सिंबल को जो स्टेट के ऊपर आपके पास आ रहा है, फिर j गोज फ्रॉम 1 to n एंड t गोज फ्रॉम 1 to कैपिटल T। ये आपकी पूरी की पूरी रिकर्जन हो गई। जब आपने इनिशियलाइज करने के बाद इनिशियल स्टेट से फर्स्ट पे आ गए थे, तो उससे आगे जो पूरे में हम चले हैं ना, ये उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। इसको अच्छी तरह से अपने जहन के अंदर समझ लें, पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद यहाँ से आगे चलें। ठीक है, आई होप आपने पॉज किया, अपने आप को कन्विंस किया, किसी भी पॉइंट पर जो टोटल आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अल्फा टी, किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर टी, और किसी भी स्टेट जे के लिए, उसके लिए आप उससे पीछे की सारी फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटीज लाते हैं, पिछले सारी की सारी स्टेट से जो इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, वहां से इसकी आप फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी लाते हैं इस स्टेट पर पहुंचने की, जिस स्टेट पर अभी आप खड़े हुए हैं, जिस आई के ऊपर आप खड़े हुए हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस स्टेट ट्रांजिशन के साथ और इस जगह इस सिंबल को ऑब्जर्व करने के साथ, एंड दिस गिव्स यू योर टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक दफा मैंने कहा, मैं और दोहरा दूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड देन टर्मिनेशन फाइनली व्हिच गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस गिवन लैम्डा इज योर फाइनल द अल्फा capital T, the final probability, the forward probability of the whole sequence, QF, final state पे पहुंचने के बाद ये किस तरह से निकलती है, I is equal to 1 to n, alpha T I, यानी जो आखिरी आपके पास लेवल था, अल्फा टी का जो लेवल था जिससे आप फाइनल स्टेट के ऊपर गए थे, अल्फा टी आई, उन सब से आपने वो पाथवे लिया है जिसकी आपने ट्रांजिशन के साथ मल्टीप्लाई किया। हमारे केस में वो 1 थी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है I to F, यानी आखिरी लेवल से फाइनल स्टेट के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी की ट्रांजिशन है, और उसके अंदर आप हर दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पर एक्यूमुलेट हुई प्रोबेबिलिटीज को, इस सब कुछ को सम कर रहे हैं, दैट गिव्स यू योर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि इस एल्गोरिथम के अब जनरल फॉर्म को देखने के बाद बेशक वीडियो थोड़ी सी रिवर्स करके फिर एक दफ़ा दोबारा देख लें, जो मैंने पिछला इसका रन किया था कम्प्लीटली, वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कन्विंस योर सेल्फ फ्रॉम हियर इफ़ यू वॉन्ट टू। यहाँ कोई और चीज़ ऑब्जर्व अगर करनी है तो मैं क्विकली इसको देख लेता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व हियर इज़ कि इस जगह पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई है किसी ऑब्जर्वेशन BJOT के साथ, क्योंकि QF जो है वो नॉन एमिटिंग होती है, जितनी आपने चीज़ें सिंबल कंज्यूम करने थे वो पहले हो चुकी। ऑल राइट, सो कुछ ऑब्जर्वेशंस इस फॉरवर्ड एल्गोरिथम के बारे में। वी कैन स्टॉप एट एनी स्टेप टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्शियल सीक्वेंस। सो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, और लर्निंग में भी आगे जाकर बहुत काम आएगा। कि दैट द क्वेश्चन इज व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग अ पार्शियल सीक्वेंस एंड एंडिंग अप इन अ स्टेट क्यू, इन अ पर्टिकुलर स्टेट क्यू, यहाँ तक आप आएँ और इस स्टेट में आकर ख़त्म करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग ऑब्जर्वेशंस PFF with the last F being processed by the state E given the HMM lambda. So if we stop the process at QF, we get the total probability of the whole sequence. So यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ये कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर सवाल क्या है, सवाल ये है कि आप सारी चीज़ें खरीदते हुए आएँ और आखिरी जो आप काम कर रहे हैं, यानी आप खाना खा रहे हैं, वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से खाएं, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी।
इस बात को दोबारा सुने। मैं ये कहता हूँ आपने ये पूरा ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस ये किया है, यानी आपने ये शॉपिंग सीक्वेंस चलाया है, आपने पेट खरीदा है, फूड खरीदा है, फिर फूड खरीदा है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि इसमें जो आखिरी काम है वो आपने आकर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में किया, इसका टोटल लाइक्लीहुड क्या है? और जो आपको अपनी स्क्रीन पे बना हुआ नजर आ रहा है ये इस चीज़ का लाइक्लीहुड है। सो यू कैन एसेंशियली स्टॉप एनीवेयर। मैं ये सवाल भी पूछ सकता था कि देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस होल सीक्वेंस एंड हैविंग फूड फ्रॉम लेट्स से पेट मार्केट, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। मैं ये भी सवाल पूछ सकता, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स का तो पूछा हुआ है, पेट मार्केट के अंदर मैं लेट्स से खाना खा रहा था, तो फिर क्या होता, हम यहाँ इन तीनों जगहों से यहाँ जा रहे होते बजाय इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते, ठीक है, और ये हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाती। ये चीज़ मैं इससे पीछे भी कहीं भी पूछ सकता था। मैं ये भी पूछ सकता था कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि मैंने पेट खरीदा है और फिर फूड जो मैं ले रहा हूँ वो लेट्स से यहाँ से ले रहा हूँ, एंड देन दैट वुड हैव मीन जस्ट दीज 3 आर्क्स। क्लियर हो गया? सो हम इस फॉरवर्ड एल्गोरिदम को किसी भी पॉइंट पर रोक कर उस स्टेट तक आने की टोटल प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस में उस जगह पहुंचकर इस स्टेट के अंदर पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी। ये हमारे लिए आगे जाकर बहुत यूजफुल होगा, इसको अभी से जहन में बिठा लें। इसी सवाल को एक और तरह पूछने का भी तरीका है। हम ये भी कह सकते थे, एक लंबा सीक्वेंस है, आपने कुछ 10 चीजें पहले खरीदी हैं, 11वीं चीज खरीदने के लिए मैं कहता हूं कि जी, और उसके बाद आपने, सो यू बॉट लेट्स से टोटल ऑफ 21 थिंग्स, सो यू बॉट 10 थिंग्स। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि 11th थिंग आप एक पर्टिकुलर स्टेट से खरीद रहे हैं, एंड देन द टोटल प्रोबेबिलिटी कि अगली 10 चीजें आप कहीं से भी खरीदेंगे। सो किसी एक जगह, किसी एक स्टेट के ऊपर फोकस करने के लिए वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन। अब ये नीचे देखें क्या है, ये क्या प्रोबेबिलिटी निकली हुई है। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग a partial sequence O1 to OT minus 1, O1 to OT minus 1, then consuming OT at a particular state Sj, and then consuming the remaining sequence OT to O capital T in the HMM। यानी आपने बस बाकी नहीं पता कि बाकी सब कुछ कहाँ किया है, एक स्टेट के बारे में आप सवाल कर रहे हैं कि यहां पर ये चीज खरीदने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हाउ वुड यू फाइंड दिस? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी। वी नो वेरी वेल कि हम यहां तक की जो प्रोबेबिलिटी है कि ये सब कुछ कंज्यूम करते हुए आए O1 to OT और यहां पहुंचकर रुक गए, ये तो हमारी फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट तक की, द फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ OT और SJ, ये तो फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी। ये आगे की कैसे निकलेगी? इसके लिए वी हैव अ डिफरेंट एल्गोरिदम व्हिच इज extremely similar to this algorithm. It's known as the backward algorithm, और अभी हम उसको देखने लगे। So the backward algorithm gives us the remaining probability. So यहाँ तक आने की probability है alpha tj, alpha tj। ये पढ़ने की अपने आप को खूब अच्छी तरह आदत डालने, इसमें कोई आपको confusion नहीं होनी चाहिए, confusion होगी तो तंग होंगे। So alpha tj is coming from t and this j। ठीक है जी, क्लियर है, सब कुछ जहन में वाज़ेह है। और इससे आगे की जो बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब होता है स्टेट से शुरू करें और आखिर तक कंज्यूम करते चले जाएं। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी। बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी इज रिटन हियर एज बेटा टी जे। टीथ सीक्वेंस में टीथ जगह से शुरू हुए और उसके बाद वो शुरू हुए हैं स्टेट जे से। सो टीथ सैंपल, टीथ ऑब्जर्वेशन कंज्यूम हो रही है स्टेट जे के अंदर, और वहां से आगे आप चले हैं व्हाट्स द टोटल प्रोबेबिलिटी कि मैं यहां से चलूं और आगे तक चलता चला जाऊं। इस कंजम्पशन की प्रोबेबिलिटी में इसमें शामिल नहीं करता हूं, ये अभी हम देखेंगे कि जब ये बेटाज निकलेंगे, बैकवर्ड प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी, तो उसके अंदर हम करंट जो ऑब्जर्वेशन है उसको कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी शामिल नहीं करते। Alright, Ji. So what's the backward algorithm? It's essentially the forward algorithm backwards, which is easier said than done. So तवज्जो ज़रूर दीजिएगा because there are some small things that you really need to understand about this. So the way you do this is that you start from the last observation OT and work backwards. So आखिर से शुरू होते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं. Stop at any intermediate step to find the total probability of partial sequence given the symbol OT plus 1 is processed by the state QK plus 1. So ये भी हम यानी इसमें भी जिस तरह से हम फॉरवर्ड में रुकते थे उसी तरह से हम बैकवर्ड में भी रुक सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर रुका हूँ। सो एसेंशली मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ व्हाट्स द टोटल प्रोबेबिलिटी कि आप यहाँ से शुरू करें, ये चीज़ ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है, इसका जिक्र इस प्रोबेबिलिटी में नहीं होगा, ये बैकवर्ड का हिस्सा नहीं होती। और ये बात गौर से समझ लीजिएगा, इसको और इसको कंज्यूम करना है यूजिंग द HMM और एंड स्टेट तक पहुंचना है। व्हाट्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट? दैट्स द बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ठीक है जी, जहन में क्लियर हो रहा है? होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही है। सो फाइंड्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सीक्वेंस इफ वी स्टॉप एट द स्टार्ट स्टेट
क्यू नॉट। तो अगर हम क्यू नॉट के ऊपर जाकर रुकें, लेट्स से यहाँ जाकर रुकें, तो दैट मीन्स कि ये प्रोबेबिलिटीज़ भी बीच में आ जाएंगी और ये वाली भी ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटीज़ बीच में आ जाएंगी। I would need to basically draw all of these now. Sorry, it's harder to find out and draw them this way than the other way around. इससे भी यहाँ पर जाना है और इससे भी यहाँ पर जाना है और इससे यहाँ पर गए हैं। ऑलराइट, सो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी जब निकलेंगी तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी दे देगा। सो इन अदर वर्ड्स, आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों को यूज करते हुए पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आप फॉरवर्ड को आखिर में रोक दें तो टोटल की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, और बैकवर्ड को शुरू में ले जाकर इनिशियल स्टेट तक ले जाएं तो आपको टोटल सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, और ये हम अभी एस्टेब्लिश भी करेंगे। अच्छा, notice that we have not reversed the direction of the arrows. So probabilities रिवर्स में कैलकुलेट हो रही हैं। ये नहीं है कि अब आपका जो है वो E गिवन P, P गिवन E बन गया, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटीज वही है, HMM वही है, HMM नहीं बदला है। सो दिस इज स्टिल P गिवन E, नॉट E गिवन P। सो प्रोबेबिलिटीज उलट नहीं गई हैं, प्रोबेबिलिटीज उसी तरह ही हैं, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन बदल गई है। दी ऑब्जर्वेशन P, यहाँ पर दूसरी बात जो नोट करने की है, मैंने आपको पहले भी क्लियर की है कि ऑब्जर्वेशन P यहाँ पे कंज्यूम नहीं हुई है। हम इसको कैलकुलेशन शुरू करते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन से एट द नेक्स्ट स्टेप, नॉट इसकी कैलकुलेशन से, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इकट्ठी यूज़ होती हैं तो फॉरवर्ड जिस पॉइंट पे पहुँच के रुकता है वहाँ वो ऑब्जर्वेशन को कंज्यूम कर चुका होता है। लिहाजा वहाँ से आगे जब बैकवर्ड लगाएंगे, अगर उसने भी इस ऑब्जर्वेशन को कंज्यूम कर लिया तो ये एक ही स्टेट पर दो ऑब्जर्वेशन कंज्यूम हो जाएंगे, विच इज़ टू ट्रिकी। सो विच इज़ ओवर एस्टिमेशन। सो नॉट टू ट्रिकी विच इज़ ओवर एस्टिमेशन। तो ओवर एस्टिमेशन से बचने के लिए हमारा बैकवर्ड एल्गोरिथम डिफाइन ही इस तरह होता है कि वो अपनी जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, एंड विच वर्क्स फाइन कि जब हम इसको इनिशियल स्टेट तक अगर ले जाएं तो वहाँ तो वैसे ही कुछ कंज्यूम नहीं होता। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द एल्गोरिथम। दिस इज द एल्गोरिथम। मैं यहाँ पहले आपको एल्गो शो कर रहा हूँ और बाद में आपको जो है वो इसका ड्राई रन दिखाऊंगा। सो यू कैन सी हियर कि इसमें इनिशियलाइजेशन जो हो रही है वो बेटा टी आई की हो रही है, यानी सबसे एंड में ए आई एफ की प्रोबेबिलिटीज से। सो दीज आर जस्ट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज ऑफ द लास्ट स्टेट टू द ऑफ द लास्ट कॉलम टू द फाइनल स्टेट। सो वो जो आपके आखिर में बिल्कुल जो बने हुए हैं ना, ये इन सब की क्यू एफ पर जाने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये वो आ रही हैं आपके पास, खाली ए आई एफ फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये सब की प्रोबेबिलिटीज जो हैं ये उनसे आप ये इसको पॉपुलेट कर रहे हैं, आपने इन तीनों को पॉपुलेट कर दिया, ठीक हो गया। नाउ द रिकर्जन अगेन जीरो और क्यू एफ जो है वो नॉन एमिटिंग है, तो अब आपके रिकर्सिव सीक्वेंस क्या होगा, वो सीक्वेंस ये होगा कि यू आर बेटा टी आई किसी भी ऑब्जर्वेशन ओ टी एट स्टेट आई, किस तरह से आप उसका बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यू गो ओवर जे 1 to कैपिटल N, सारी स्टेट्स पर गए, ए आई जे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, बी जे ओ टी प्लस 1, ये याद रखें यहाँ पर बी जे ओ टी प्लस 1 अगली ऑब्जर्वेशन से हम शुरू कर रहे हैं, करंट से नहीं, मल्टीप्लाइड बाय बेटा टी प्लस 1 जे, यहाँ से आगे की सारी बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी। सो आगे की सारी बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी, मुझसे उस आगे की जगह तक की ट्रांजिशन और उस आगे की जगह के ऊपर सिंबल ओ टी प्लस 1 का कंज्यूम होना, ठीक है। एंड देन टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन लैम्डा इज either alpha t qf forward probability at the last state या beta 1 0 backward probability at the beginning of the at the initial state q0 and observation o1, क्योंकि हमने जाहिर है, हमें पता है o1 यहाँ कंज्यूम नहीं होनी, तो लिहाजा दिस इज दी बेटा 1 o बेटा 1 0 दोनों इक्वल हैं। या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है j इक्वल्स 1 to n a0j इंटू बेटा। सो a0j क्या है, ये हमें दे रहा है 0 से लेकर j की ट्रांजिशन, यानी इस पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम की ट्रांजिशंस, मल्टीप्लाइड बाय स्टेट 0 से jth स्टेट तक की ट्रांजिशन इन अ पर्टिकुलर कॉलम, मल्टीप्लाइड बाय bjo1, यानी यहाँ से आगे की जो हमारी इस जगह के ऊपर जो हमारी जो है ऑब्जर्वेशन o1 की कंज्यूम होने की प्रोबेबिलिटी इनटू द बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा 1 j, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पूरी फॉर्मुलेशन आ गई है बैकवर्ड एल्गोरिथम की। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ एंड लेट्स ऑब्जर्व अ फ्यू थिंग्स जो यहाँ पर हमें बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है।
सो इनके अंदर पहली चीज़ आप ये देखिए कि दिस बेटा टी आई डज नॉट कंज्यूम सिंबल ओ टी। ये मैंने आपको पहले भी जब हम जा रहे थे हमने ये देखा था कि इसके अंदर ओ टी जो है कंज्यूम नहीं हो रहा, और हमने इसकी रीज़न भी देख ली हुई है। दूसरी चीज़, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सिंबल इज कंज्यूम्ड हियर, इट्स कंज्यूम्ड हियर। सो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो जिस वक्त हम इनिशियल स्टेट से आगे आए, इनिशियल स्टेट पर कुछ कंज्यूम नहीं हुआ, which is fine क्योंकि उस पर वैसे भी कुछ कंज्यूम नहीं होता, तो the backward probability works perfectly fine with that। फर्स्ट जो कंजम्पशन होती है वो आपकी फर्स्ट कॉलम के अंदर होती है, सो इट्स बेसिकली कंज्यूम्ड हियर। ठीक है, और यहाँ से आगे की फिर जितनी बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी है और जो इनकी ट्रांजिशंस थी यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी पे पहुँचने की सारी ट्रांजिशंस वो इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो ऑल दीज थ्री गिव अस द टोटल बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओवरऑल सीक्वेंस। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज दी AIJ probability इस रिलेशन के अंदर। दिस इज द BJOT plus 1 probability। सो आपने यहाँ की कंजम्पशन की probability नहीं देखी, यहाँ की कंजम्पशन की probability देखी है, and this is the overall probability, the beta probability, the backward probability at this point, जो इस point पे कैलकुलेट हुई भी है। so ये तीनों मिलके हमें overall backward probability दे देती हैं। So now let's watch this happening। आपको अगर एल्गोरिदम के अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन रह भी गई होगी कि ये क्या हो रहा है, तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये देखें जनाब, ये इनिशियलाइजेशन है आपके सामने हुई भी रखी हुई है। सो ये इनिशियलाइजेशन आपको शो कर रही है इसेंशली जस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ P गोइंग टू QF विच इज़ 1, E गोइंग टू F QF और F गोइंग टू QF, ये तीनों 1 है। और हमने कहा था कि ये दिस इज़ परफेक्टली फाइन। इक्वल प्रोबेबिलिटी के केस में हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो अब ये इस सिंबल की कंजम्पशन हम इस वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इस जगह खड़ा होकर प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ बैकवर्ड की, और मैं इस सिंबल को कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको खाली कंज्यूम किया है अभी तक। और जब हम यहाँ खड़े होकर कैलकुलेशन कर रहे थे तो इसको भी कंज्यूम नहीं किया था। ठीक है, सो जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं उससे आगे की सारी कंजम्पशन हुई भी होती है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस हैपनिंग। 1, वो ये वाला 1 है, into 0.15. What is 0.15? 0.15 is the probability of having this f at this p. So ये इस p के ऊपर इस f को कंज्यूम करने की 0.15 है, and 0.11 is just the transition 0.11 going from p to p। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पर इसकी प्रोबेबिलिटी तीनों आ गई, इनका सम इस पॉइंट तक की बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये निकल आई अब आपके पास इस पॉइंट की बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी। व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल इट? इसको कहेंगे हम इस पॉइंट से शुरू होना, इसकी ऑब्जर्वेशन पहले कंज्यूम हो चुकी है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। इस पॉइंट से शुरू होना, अगली ऑब्जर्वेशन से ऑनवर्ड सब कुछ कंज्यूम करना बाकी है HMM के अंदर, ये उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली ये यहाँ की निकल आई, ये यहाँ की निकल आई, और अब आप देख सकते हैं कि आपने इसको कंज्यूम किया है इस f को, जब आप इससे पिछले लेवल की प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे निकल रही हैं ये प्रोबेबिलिटीज़? चले मैं ये तीनों निकाल लूँ और उसके बाद आपको शो करूँ। लेट्स से ये पहली वाली कैसे निकल रही है। दिस 0.2985 इज कमिंग फ्रॉम हियर, 0.15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग f एट p, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एंड दिस 0.11 इज this probability, and so on and so forth for all these three arcs. You calculate this, and similarly you calculate this, you calculate this, and now you go to the first level, यानी Q naught। this is the first column जिसको मैं कहा करता हूँ, और इसके बाद अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं स्टेट ज़ीरो के ऊपर जाकर। और स्टेट ज़ीरो के ऊपर जाकर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरह करेंगे, और हम इस तरह से करेंगे, एंड देन दिस इज़ जस्ट 0.07 ये वाला into 0.8, which is the probability of consuming P at P, the probability of consuming P at P। ठीक है, तो आपने इसकी कंजम्पशन की प्रोबेबिलिटी डाली इसमें, इन तीनों को सम किया और आपने ये फाइनल आंसर दे दिया। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, द टोटल बैकवर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंटायर सीक्वेंस PFF। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, और आई होप के बैकवर्ड एल्गोरिथम भी आपको बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गया। ऑलराइट जी, सो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकेंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड एल्गोरिथम आपने देख लिया है। इसेंशली फॉरवर्ड और बैकवर्ड एल्गोरिथम अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ही काम कर रहा है, एक पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है, लेकिन अगर किसी पार्शियल जगह पर जब रुकते हैं तो देन वी एक्चुअली सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट वन ऑफ देम, द फॉरवर्ड एल्गोरिथम, फाइंड्स आउट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग दिस सीक्वेंस गिवन द HMM एंड देन स्टॉपिंग एट अ पर्टिकुलर स्टेट एंड एट अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
और similarly backward algorithm is the probability that you start from a particular state और यहाँ से आगे के सारे symbols को आपने HMM के अंदर consume करना है. So these two probabilities work together, the forward and the backward probability, जो आगे जाकर अभी देखेंगे कि these form the two essential components of the forward backward algorithm, the training algorithm, the unsupervised training algorithm for hidden Markov models. यहाँ तक पहुंचकर आई होप कि आपको ये सब कैलकुलेशंस करना आ गई हैं. जो हमारा अब असल मकसद रह गया है अगले लेक्चर के अंदर, वो पहला मकसद ये है कि हम डिकोडिंग देखेंगे, जो हमारा असल स्पीच रिकग्निशन का काम है, द विटर्बी एल्गोरिथम. ये हम डिकोडिंग के अंदर देखेंगे. एंड देन after that we're going to look at the learning problem for hidden Markov models, and then we'll be completely equipped now from the machine learning perspective to understand the speech recognition completely. तो उसके बाद सिर्फ रह जाएगा हमारा कि किस तरह से हमने the probability of a particular phoneme, a particular frame find करनी है given a particular phoneme. ठीक है, वो जो रिवर्स हुई भी probability होती है वो सिर्फ रह जाएगी, और वो हम आखिरी वीक के अंदर उसको देखकर and then we'll finish our discussion of speech recognition. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.